Hello students, as we know chapter 7 which is database management system has started. In previous video we had discussed about how can we open MS Access window and how can we create a table by using design view or using table design view. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is setting primary key manually. How can we set in primary key manually? As we know, MS Access can create a primary key on a column on its own. So if you want to create a primary key manually, you have to follow some steps. And here you can see some steps you have to follow to create a primary key. So first of all, to create a primary key, we have to create a table. So I'm going to create a table in MS Access window. So you can see MS Access window has opened now. Success window has opened now. Now I'm going to choose the blank database option. Now providing the database name, access, whatever name you want to assign, just assign the name of the file and then click on create option and your database has been created. After database created, now I'm going to create a table by using table design view. Here you can see I'm going to click on create table and then I'm going to choose table design option and you can see आपका फॉर्मेट रेडी हो चुका है, आपके सामने वर्किंग एरिया पे अपीयर हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड field name and then set the data type. So to provide field name I'm going to use, I'm providing field name, admission number, day name, student's name, then class, then roll number. And now after assigning the field name I'm going to set the data type of each field name. So for admission number I'm going to use number data type. For student name I'm going to use text is as it is है, इसको ऐसे ही रहने देंगे. Then for class I'm using number and then for roll number I'm using number data type. For roll number field name I'm using number data type. Okay, after assigning the data type, now I'm going to create a primary key manually. So to create a primary key, let me show you. To create a primary key, you have to select the desired field. On the design tab in tool section, click on primary key. So when you want to create a primary key manually, you have to select the field which you want to create as primary key. आपको उस फील्ड को सेलेक्ट करना होगा जिसे आप प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हो. आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड फील्ड यू हैव टू क्लिक on design tab in tool section, click on primary key. So you have to click on primary key. When you click on primary key, you can see a key icon appears before the field name. आप क्या देखोगे, फील्ड नेम जो सेलेक्टेड फील्ड नेम था उसके जस्ट बिफोर एक की आइकन अपीयर हो गया, जो कि ये शो करता है ये आपका दिस फील्ड इज सेट एज ए प्राइमरी की. आपका ये फील्ड एज ए प्राइमरी की सेट हो चुका है. लेट मी शो यू. हियर कैन सी ये आपका टेबल है. नाउ आई एम गोइंग टू सेट this field admission number, this field as I'm going to set this field as a primary key. So to set the primary key manually, first of all I'm going to select this field. After selecting this field I'm going to in design tool, here you can see this is design option and this in tool section, here you can see this is tool section. In tool section I'm going to click on primary key option. Here you can see this is the primary key option. I'm going to click on it. When I clicked on it, I can see here a key icon appears just before the selected field name. तो जो फील्ड आप सेलेक्ट किए थे उसके जस्ट सामने एक की आइकन अपीयर हो चुका है, विच मीन्स दिस फील्ड नेम विल बी सेट एज प्राइमरी की. ये फील्ड नेम आपका एज ए प्राइमरी की सेट हो चुका है. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट ए प्राइमरी की. सो नाउ मूविंग फर्दर, the next topic is entering data in a table. How can we enter data in a table? So after to enter data in a table, we have to first of all we have to save this table. I'm going to save this table after creating the after assigning the field name and setting the data type. Now I'm going to save this table, providing the name of table like data, providing the name of the table and then click on OK button and your table has been saved. आपका table save हो चुका है. Now I'm going to enter data in a table. So first of all, here you can see some steps you have to follow. So after in the navigation pane under the to enter data in a table, you have to follow some steps.
So the first step is in the navigation pane under table section, double click on the desired table name. In navigation pane, so this is the navigation pane. In navigation pane, whatever table you want to open and want to enter the data in that table, you have to just double click on it. So I'm going to, here can see this is data name, table name data. I'm going to open this table to enter the data. So just double click on it, and what did you see, आपका जो टेबल है वो आपके सामने, द टेबल ओपन्स इन द वर्किंग एरिया. आपका जो टेबल है वो डाटा टेबल आपके वर्किंग एरिया में ओपन हो चुका है. क्लिक ऑन एनी सेल एंड यूज एरो की टू ब्राउज इन द टेबल. गो टू द लास्ट ब्लैंक रो एंड इंटर डाटा. टू स्टार्ट अ न्यू रो प्रेस इंटर की. तो आप देख सकते हो टू इंटर डाटा, क्लिक ऑन एनी सेल एंड फिट द डाटा. आप जो भी डाटा फिट करना चाहते हो जस्ट फिट द डाटा. here you can see after feeding the data, go to the next cell, just use arrow key and go to the next cell, provide the name, then फिर again go to the next cell, provide the what content, आप जो भी content provide करना चाहते हो just provide the content. And if you want to go to the next row, just press enter key and what did you see, आपका next row start हो चुका है. Again provide all the content, आप जो भी content provide करना चाहते हो provide करो, and then अगेन आप नेक्स्ट इंटर की प्रेस करो तो आपका नेक्स्ट डाटा में आप आ जाते, नेक्स्ट रो में आप आ सकते हो. तो एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू रो यू हैव टू प्रेस इंटर की. जितनी बार भी आप न्यू रो स्टार्ट करना चाहते हो उतनी बार आपको इंटर की प्रेस करना और आप न्यू रो में आप जा सकते हो. सो व्हेन यू क्लोज द टेबल, ऑल द डाटा इंटर्ड बाय यू विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली. सो व्हेन यू क्लोज, ये कैसे, दिस इज द क्लोज टेबल, क्लोज ऑप्शन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, जो डाटा विल बी सेव ऑटोमेटिकली. ऑल द डाटा जो आप इंटर किए अपने टेबल में वो सारे डाटा आपके ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं. लेट मी शो यू, आई एम गोइंग टू ओपन दिस टेबल. आप देख सकते हो आपके सारे डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं. ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड all those topics which I have discussed today. With these topics, your chapter 7 has completed now. Thank you.